I am Dr. Dipankar Banerjee from Jabalpur. I am a gynecologist with a special interest in reproductive medicine, IVF, and blastocyst transfer with male infertility and fetal medicine with genetics. And I am taking these questions from YouTube comment section. हम पिछली बार का एपिसोड कर नहीं पाए थे because of some reason. So please, I request Mr. Deven to go ahead with the questions from YouTube comment section. सर नॉर्मल स्कैन और कलर डॉपलर स्कैन में क्या अंतर होता है? ओके एक लोगों के बीच में एक भ्रांति है कि एक कलर सोनोग्राफी होती है, एक ब्लैक एंड वाइट सोनोग्राफी होती है। तो सोनोग्राफी कई प्रकार की होती है, पर जो कलर डॉपलर हम बोलते हैं वो कलर डॉपलर का मतलब ये होता है कि जब हम ब्लैक एंड वाइट सोनोग्राफी जो नॉर्मली हम करते हैं उसमें जब हम बच्चे का या कहीं का भी ब्लड सर्कुलेशन को देखने के लिए एक टेक्निक अपनाते हैं जिसमें हमें चलती हुई ब्लड सप्लाई दिखती है, उसमें हम एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम इको के रिकॉर्डिंग में होता है यूज साउंड वेव का ही, और उसमें हम उसके इको के अमाउंट को कलर से हम डेजिग्नेट करते हैं कि जो आने वाला है प्रोब की तरफ वो लाल दिखे और दूर जाने वाला वो नीला दिखे, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई हो रही है। तो कलर डॉपलर हर सोनोग्राफी के लिए साथ जरूरी नहीं है। कलर डॉपलर किसी सोनोग्राफी का क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा वो भी जरूरी नहीं है। कलर डॉपलर जब रिक्वायरमेंट होती है तो बहुत हेल्प करती है बच्चे के ग्रोथ में, जो हम यूज करते हैं और बहुत सारी जगह पर। तो कलर डॉपलर को लेके उसको मान लेना कि जो ब्लैक एंड वाइट सोनोग्राफी वो कलर हो जाएगी, वैसा नहीं है। हाय सर, आई एम राम्या. प्लीज शेयर योर कमेंट्स इन इंग्लिश. Any medicines that parents need to take if husband is with sickle cell anemia and wife is with Punjab D? Please share your comments. It is a very important question. I am putting in English, but it is common in our country, and if both husband and wife are having some problem in globin gene which makes the hemoglobin, I am writing one thing. It is like hemo and globin. Hemo means iron, globin means protein. There are two type of protein, alpha protein and beta protein. So there is a alpha globin and beta globin. There are two alpha chains and two beta chains. So it is alpha 2, beta 2. This is the normal adult hemoglobin. Here iron. Now this globin is a protein. So protein is made up of amino acids. I am going little bit in detail because it requires, this is amino acids because this is in unit of protein. These amino acids are coded by codon. These codon, when they are on DNA, so this is called gene. So this beta globin protein is governed by a gene. This gene has a different letters which are called codes which makes the amino acid. If there is one different code here, then the person will have a different amino acid here. Then this gene is abnormal. So one abnormality is sickle cell. Why it is sickle cell? Because the red blood cell, when it is dehydrated or loss of oxygen, it precipitates in this here. So it takes a shape of sickle. So it is a one defect in code which makes the cell sickle and it destroys. So there is an anemia. Now, if this codon is somewhere defective in one partner and the other partner is having another code, same codon for making beta globin gene, and his codon is defective in some other place. So this is one variety, that is Punjab variety. There are many varieties. So the defect is in the gene but at a different place. When this
combined together. So baby might be having with sickle one side and Punjab one side. So it is called compound heterozygote, baby will be diseased. If we have this type of carrier, husband and wife, because half of the things are okay, half things are bad, so with half good they are okay. But when half and half abnormal are united, the baby will be diseased. To prevent this disease, we do either IVF with PGT-M, we make disease, try to sort out disease-free embryo, or we do prenatal diagnosis. That is by chorion-villus sampling at 3rd month of pregnancy or amniocentesis in 4th month of pregnancy to see whether the baby is carrier or disease free. This is the thing which we do in our clinic as a in genetic clinic. सर मुझे पीरियड होने के 10 दिन पहले से ही पेन स्टार्ट क्यों हो जाते हैं? पीरियड होने के 10 दिन पहले से यदि पेन स्टार्ट होता है तो ये 2 कारण से होता है. एक होता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ हो या फिर आपको जो बहुत कॉमन है एंडोमेट्रियोसिस हुआ हो. यदि वैसा है तो आप अपने गायनिक से मिलके एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स से ठीक हो सकती है, पर एंडोमेट्रियोसिस थोड़ी मुश्किल वाली चीज़ होती है, वो बढ़ती जाती है. कई बार जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ा कारण होती है प्रेगनेंसी नहीं होने देने का, और यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो एंडोमेट्रियोसिस बढ़ती भी जाती है. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपको यदि हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, आइडियल फर्टिलिटी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. सब्सक्रिप्शन बढ़ने से एक बहुत बड़ा हौसला मिलता है, बहुत बड़ी एक प्रेरणा मिलती है आप लोगों की तरफ से. वैसे सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमें चाहने के लिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. नोटिफिकेशन को यदि आप ऑन रखते हैं तो जो नए वीडियो मैं डालता हूं उसका आपको एक नोटिफिकेशन मिल सकता है. मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके सिंपल शब्दों में आप तक उसका आंसर पहुंचाऊं जहां तक आपको हेल्प हो सके. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.